कहते हैं आप? नहीं, हिंदुइज्म एक बहुत लिबरल थॉट है। आप मंदिर में जाइए न जाइए, आप शिव को मानिए शिव को न मानिए, आप जो है विष्णु को मानिए विष्णु को न मानिए, तब भी ये आप हिंदू है। तो एक बहुत लिबरल थॉट है ये। मॉडर्न ज़माने के लिए जो है हिंदुइज़्म द मोस्ट जो सूटेबल रिलीजन अगर कोई है वो हिंदुइज़्म है। बाकी सब जो है ना जितने भी सेमेटिक रिलीजन है, जैसे क्रिश्चियनिटी हुआ, जूडाइज़म हुआ, इस्लाम हुआ, ये बहुत स्ट्रेट जैकेटेड रिलीजन है। उसमें अगर वो नहीं करेंगे तो या ये नहीं करेंगे तो, अगर इस विश्वास आपको नहीं है, उस विश्वास नहीं है, देन यू आर आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ क्रिश्चियनिटी, जूडाइज़म, इस्लाम। तो एक अगर एक आदमी लिबरल आदमी है, उनके लिए अगर कोई रिलीजन है, दैट इज हिंदुइज्म। The second excavation of Professor B.B. Lal was at Ayodhya, and we as a school after completing our MA, we had taken admission in the School of Archaeology, which is a postgraduate diploma course, and we went to the site, and I was one of the members of the party. And before the excavation, we do the exploration part. We explored the area. So at that time, entry was prohibited inside the mosque because it was under dispute. But we were from the research team, so we were given free entry and exit also. I went into the site and I saw inside the mosque there were 12 pillars of temple pillars at that time. Now the question comes, how would you say these are temple pillars? This is a natural question. How would you say? If you see that temple pillars, that will be having Purna Kalasha motif on the lowest part. What is a Purna Kalasha? Purna Kalasha is a vase or a pitcher from which foliation would be coming out. This is one of the Ashtamangala Chinnas, 8 auspicious symbols in Hinduism. You go to any of the ancient temple, and especially 10th, 11th, 12th century, you will be finding this kind of Ashtamangala Chinnas, or this one, that small vases. And we are all from Delhi, and still if you have any doubt, go to Qutub Minar. Near Qutub Minar you have a mosque known as Quwwatul Islam Masjid, and there is a inscription also in Arabic which says that 27 temples were destroyed for constructing this particular mosque, that is Quwwatul Islam, which is the might of Islam. And there is a description, just in front of it is in Arabic. There is a book known as Tajul Ma'asir. It is written by a contemporary historian, Hassan Nizami, in which he also says that 27 temples, mostly Jain temples, were destroyed for constructing this one. And look at the pillars of that place. There you will be able to see this Purna Kalashas, not 1, 2, 10, 15. You will be finding in abundance. Similarly, you will be finding this kind of things also. This one, this one, Devi Devdas, you can find Ganeshji there, you can find Vishnu there, you can find Shiva there, and you will be finding a number of gods and goddesses also. And sometimes this Bharavahagas, all of them will be looking at you from the ceilings. कुछ गलतियां हो चुकी है, ये गलती एडमिट करने में क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, एंड द प्रेजेंट मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. वो कुछ अफगान लोग आ गए थे, उन लोगों ने ये सारी गलतियां किया, एडमिट कीजिए, एंड वी आर नॉट, प्रेजेंट मुस्लिम्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. लेकिन प्रेजेंट मुस्लिम्स तब रिस्पॉन्सिबल होते हैं व्हेन दे ट्राई टू जस्टिफाई इट. वो गलत है, वो मानना नहीं है, वो मानते नहीं है. ये सब जो है जस्टिफिकेशन फिर करना के लिए फिर वो कोशिश करते, वहाँ गलती शुरू हो जाती है. The problem with some of our historians, that is mainly our Marxist historian, is they would not accept it. Even if they find it also, they will not accept it. No, because because the whole community, the whole Muslim community, the whole Hindu community, there was an en masse conversion. That is why this has taken place. So that is one of their argument.
And the second argument is there, this was all the temples were, this was the storehouse of all gold and silver and everything. So they wanted to take away all these things, and it was mainly because of that this attack had come. Okay, if they want to take away this gold, silver and everything, let them take it out, we have no problem. But why did they destroy the temple? Completely different attitude. And this attitude of the Marxist historians has complicated the entire issue of Sri Rama temple. Because I was in Aligarh Muslim University earlier, and I knew the temperament of Muslim, because it became a problem from 1980 onwards. And in the 80s, Muslims were almost, many of the Muslims and top leaders were also almost ready to hand it over so that, a problem could be solved. There, this historian, especially Professor Irfan Habib, Romila Thapar and other Marxist historian R.S. Sharma and Dr. Jha, they came forward. They were all historians, they were not archaeologists. They came and they said, no, it has been, the place has been excavated by Professor B.B. Lal, and he did not find any material from there. And so Muslims, you should not hand it over the place to Hindu community for constructing the temple. So there, the Muslim communities, they were not that much educated. They thought these are all great historians. They were historians, of course, great eminent historians, but they were not archaeologists. Then Professor B.B. Lal, he had to come out again and say, no, we have got number of things. And then he started saying, not only the pillars, one is the pillar. Pillars were reused, extensively reused for rebuilding the mosque. And not only that, we also got the brick bases on which the pillar was standing. All these pillars were standing. So again, the same historian, they came forward because they had a lot of connection with Times of India, with this paper, that paper, and they were very manipulative also because of their extensive connections also. Only their news was carried out by a number of people, and Muslims were also misled by this group of people. तो जाहिर सी बात है, फिर देन बटेश्वर में जो मैंने काम किया है, डाकुओं के साथ मिलके, निर्भय सिंह गुज्जर के साथ मिलके जो 80 मंदिर मैंने जो खड़ा किया है, उस तरह की कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इंडिया में शायद अभी तक हुआ नहीं है। उसके बारे में थोड़ा और बताइए। ये असल में जो है चंबल वैली में बटेश्वर करके एक जगह है, मुरैना में है, तो उसमें देयर आर मोर देन 200 टेम्पल्स है। तो उसमें ये टेम्पल्स जितने भी थे, ये वहाँ काम इसलिए नहीं कर सकता था कि वहाँ निर्भय सिंह गुज्जर है, बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो वहाँ कोई जा नहीं सकता था। और हम लोगों ने थोड़ा सा जरिया बनाया, कुछ इंटरमीडियरी के थ्रू जो ना उनसे बात करवाया, आखिर में वो लोग तैयार हो गए कि काम करने के लिए, हमारे साथ काम करवाने के लिए उन्हें परमिशन देना है। तो हमने उसमें जो ना 200 मंदिर में 80 मंदिर को खड़ा कर दिया, बिल्कुल तबाह और बर्बाद, इससे ज़्यादा बर्बादी नहीं हो सकता था। वो अर्थक्वेक में बिल्कुल गिर गया था, तो पूरा रिस्टोर किया, पूरा रिस्टोर किया। शिव को मुझे कभी लगा कि जो ना शिव जी से मेरा कुछ कनेक्शन है करके, तो मैं एक रैशनलिस्ट हूँ, लेकिन फिर भी कुछ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होता है, स्पेशली शिवजी के, लॉर्ड शिवा के साथ भी होता है मेरा। और ये भी है कि कुछ दरगाह में भी हुआ है, कुछ चर्चेस में भी हुआ है। कुछ बताइए ना। तो मैं ये कैसा है, ये कनेक्ट करना कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं मुझे। तो जैसे कुछ इसके बारे में लॉर्ड शिवा का ये था कि एक बार मैं आई वॉज इन स्लीप, नींद में था, तो मुझे शिवाजी प्रकट हुआ और उन्होंने ये कहा कि जो ना मेरा ये मंदिर, दैट वॉज इन छत्तीसगढ़ में था, ये मंदिर टूट रहा है और तुम जाके उसको ठीक ठाक करो करके। एंड तो मैंने कहा कि जो ना ये उसके लिए तो आदमी मेरे पास नहीं है, वो सब जो ना मध्य प्रदेश में है। तो कहा कि वो तो है, तो मेरा काम है, तुम्हें उसके लिए मैं लायक बना दूंगा, लेकिन तुम्हें ये काम करना है। अच्छा, अब जो बात होती है कि और भी बहुत जगह हैं जहां मंदिर को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई हैं,
क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? नहीं, इस तरह की इंसिडेंट्स बहुत जगह पे काशी हुआ जैसे है। हाँ सबसे बड़ा है बनारस बिल्कुल में। बिल्कुल बनारस में है। और ज्ञानवापी जो मस्जिद है और कृष्णा का जो जन्म स्थान है जो मथुरा में है। लेकिन हम लोगों के लिए इन आगे इस मामले में अब जो ना आगे बढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देयर इज़ एन एक्ट ऑफ 1991 जो रिलीजियस वर्शिप एक्ट कहते हैं उसको। तो उस रिलीजियस वर्शिप एक्ट के हिसाब से 15 अगस्त 1947 में अगर मंदिर है वो मंदिर है, मस्जिद है तो मस्जिद है। तो वही जो ना हम लोगों को मेंटेन करना चाहिए और आगे ले जाना नहीं चाहिए। लेकिन मुझसे अगर पूछे तो मैं कहूँगा ज्ञानवापी भी और मथुरा भी बिल्कुल मुसलमानों को छोड़ देना चाहिए करके।